बेटा आप रीड करोगे? कर देते हैं मैम। हाँ जी करो। Overlapping and cross-cutting difference. Social division take place when some social different overlapping with other differences. The difference between the blacks and whites become a social division in the USA because the blacks tend to be poor, homeless, and discrimination against. In our country, the elite tend to be poor and landless. They often face discrimination and injustice. Situation of this kind product social division. When one kind of social division becoming more important than the other, and people start feeling that they belong to different communication. If social division cross-cut one another, it is difficult to pit one group of people against the other. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different sides on a different issues. Consider the case of Northern Ireland and the Northern lands. Both are नीदरलैंड, हाँ जी। predominant Croatian, but divided between Catholic and Protestant. In Northern Ireland, class and relation overlap with each other. If you are Cladlin, you are also more like to be poor, and you may have suffered a history of discrimination in the Netherlands. Class and relation tend to cut across each other. Countries and protection are about equality, like to be poor or rich. The result is that आगे करना मैम. The result is that Catholics and Protestants have had conflicts in Northern Ireland. Well, they do not do some in the eastern lands. Overlapping social division create a possibility of deep social division and tense cross-cutting social division are easily to across. More social division of one kind or another issue exists in most countries. It does not matter whether the country is small or big. India is the best country with the many communication. Belgium is the small country with many communication. Even those countries such as Germany and Sweden that were once highly Americans are undergoing a rapid charge with influx of people from the part of the world, Nagoya bringing with them their own culture and tend to form a different social communication. In this sense, most countries of the world are multicultural. मल्टीकल्चरल। बेटा ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। बेटा इसमें क्या है, जैसे समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। हमारे देश में बेटा लोग दलित है, दलित लोग पाए जाते हैं, वो भी जान के पूर है, तो उन्होंने कोल भी जान के जमीन नहीं हैगी। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਜੋਂ ਪਰ ਬੇਟਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ कि हित सॉरी ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जबकि दूसरे मुद्दे मुद्दों पर उनके कई बार नजरिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਗ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਨਸਲ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ओके सो नेक्स्ट बेटा रीड करो यहाँ से पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन Politicals of social division. How do this social division often politicals? What does political do to this social divisions? At first sight, it would appear that the combination of politicals and social division is very dangerous and exposed. Democracy involves competitions among various political parts. Their competition tend to divided any social. If they start competition in team of some extraneous social division, it can make social divisions into political division and lead to conflict, violent, or even destruction of a country. This has happened in many countries. मैम आगे पढ़े रेंज ऑफ आउटकम पढ़े मैम हाँ जी रीड करो बेटा ring of outcomes. Take the cause of Northern Ireland that we refer to above. This recognition of the United Kingdom has been for many years the setted of polite and better ethno political conflict. Its population is divided into two major sectors of Christianization. 53% are Protestant, while 44% are Roman Catholic. The Catholic were represented by nationalist partisan who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland. A pair formation Catalan country, the Protestant were represented by Union who wanted to remain with the UK, which is predominantly protein. Hundred of culturation, mineral and security forces were killed in the fight between Union and nationalist and between the Scottish portion of the UK and the nationalist. It was only in 1998 that the UK government and the Northern list मैम आगे करना गेंट मैम यहाँ से पढ़ना है या पीछे रह गया पेज एक मिनट बेटा यस मैम एक मिनट
हाँ जी यस मैम, पढ़े मैम? पढ़े मैम? रुक जाऊं मैम। Read a speech trial after which the later suspended that armament struggle in Euclid. The story did not have a happy ending. Political competition along relation ending its lines lead to the disintegration of Yugoslav into 6 independent countries. Such example leads some people to conclude that political and social divisions are just must not be allowed to mix. They think that it would be best if there are no social division in any country. If a social division do exist in a country, that they must never be expressed in political. At the same time, every expression of social division in political does not lead to such a distress. We have already seen that social division of one kind or another exists in most countries of the world. Wherever they exist, this division are if referred in political मैम आगे करना, in a in a democracy. It is only natural that political partition would take about this. आगे करना मैम। हाँ जी division This division make different promise to different numerical look after due representation of various communication and make political to redress the aggravation of the advantages social dividing country people from one communication lead to purple some party more than other in many countries. These are found that only and one does not lead to the need. आगे भी पढ़े मैम? बेटा यहीं तक चलो इतना ही समझ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੂਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੀਲਸ ਆਫ ਦਾ ਆਊਟਕਮਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 53% ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 44 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ
ਕੈਥੋਲਿਕ ਬੇਟਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ්य ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸੈਨਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ऐसे उदाहरण के आधार पर बेटा जैसे कुछ लोग ये भी दसते हैं कि राजनीति ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਥਿਤੀ ਹੈ जो समाज भी कि में किसी की किस्म का भी यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਜਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ यानी कि व्यक्ति ही नहीं ये फुट पैदा करते हमने जैसे पहले भी देखा है कि दुनिया के ज़्यादा बहुत सारे देशों में किसी न किसी किस्म का समाजिक विभाजन पाए जाते हैं उन्होंने ते ऐसी विभाजन राजनीतिक शक्ल भी जान के अख्तियार करते ही हैं लेकिन बेटा विभिन्न समूह में अलग अलग वादे करना भी एक स्वाभाविक बात है उत्थों के लोग अलग अलग यानी कि वादे करते हैं मंत्री ये भी यानी कि विभिन्न समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ को पूरा करने वाली ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तो इसी के हित में राजनीति होती है जो सिर्फ एक ही समुदाय पर यानी कि ध्यान देती है पर इसकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होती सो नेक्स्ट बेटा द थ्री डिटर्मिनेंट्स कोमल अनम्यूट हो बेटा कोमल कोमल यस मैम जी बेटा रीड करो थ्री डिटर्मिनेंट्स three factors are three factors are essential in defining the outcome of political or social division. First of all, the outcome depends on how people view their incidents. If people see their incidents in a singular and exclusive terms, it become very difficult to according as long as people in northern Ireland see themselves as only Catholics or Protestants. Their differences get difficult to reclaim. It is much easily if the people see that their incidents are multiple and are complementary with the national incident. A major of Belagan now feel that they are as much Belagan as they are Dutch or German speaking
This helped them to stay together. This This is how most people in our country see their incidents. They think of themselves as Indian, as belong to say or a language group or a social or a religion community. Second, it depends on how political leaders listed the depend of any community. It is easily to coordinate depend that are within the constitutional depend that are within the constitution framework and are not at the cost of another community. The demand, It depends. the demand, The demand for only Sinhala was at the cost of interest and identity. The temple community in Sri Lanka in Yugoslavia, the usage of their demand in such as a way that these could not be accommodated within a single country. Third, it depends how the government wishes to react to depend of different groups as we say in the example of Belgium and Sri Lanka. If the ruler was willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become threatening less threatening for the countries, but if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite. Such expected to attempt at a forced opinion say the integration often say the siege of distinction. This is the assertion of social diversity in a country need not to be seen as a source of danger in democracy. Intensity. This lead to suggestion of a democracy, but a person a tendency to gather diversity and willingness to accommodate it do not but easily people who feel marginalization, deprived and discriminated have to fight against injustice. Such a fight often take the democratic path, voicing their demand in a peaceful constitutional manner and seeking a fair position there through elections. Sometimes social differences can take the form of an unacceptable level of inequality and justice. The pairs struggle against inequality sometimes take the path of violence and defense of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also accommodate diversity. मैम हो गया हाँ जी हाँ जी। Three determinants.
बेटा समाजिक ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ परिणाम की निकलती है भी तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। फर्स्ट पहली चीज़ है लोगों में बेटा अपनी पहचान के प्रति भी जानी कि भावना होनी चाहिए अपनी पहचान। हेलो मैम। जी बेटा मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी, बहुत हौली आ रही है। हेलो आ रही है? हेलो मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपकी आवाज बहुत हौली आ रही है। बेटा अब तो सुनाई दे रहा होगा आपको बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा हाँ बोलो। जी मैम। बेटा आपकी मैम हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी मैम बोलो जी। बेटा अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब सुनाई दे रही है मैम अब। तो बेटा बता दिया करो। ओके ओके मैम। ठीक है जी। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ परिणाम ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕ में अपनी पहचान के प्रति भी उन्होंने पता होना चाहिए वा। कुछ लोग होंगे ने खुद को बेटा सबसे अलग समझते हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि जब तक जैसे बेटा उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे भी तब तक उन्होंने भी शांत होना बहुत असंभव नहीं है, असंभव है उन्होंने। ते अगर लोग बेटा अपनी पहचान के प्रति सुचेत हैं तो उन्होंने राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी और उन्हें हम भी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा और सहयोगी मानते हैं तो वो उन्हें कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेटे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं भले ही वे डच और जर्मन बोलते हैं। इस नज़रिए से बेटा उन्हें साथ साथ रहने में भी बेटा मदद मिलती है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग की करते हैं अपनी पहचान को लेकर भी नज़रिया बदल लेते हैं। कई बार वे खुद को पहले भारती दसते हैं फिर बाद किसी और जो चले जाते हैं कि जाके फिर उन्होंने उसे समुदाय का सदस्य दसन लग जाते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हैगी बेटा वो है किसी समुदाय की मांग को जैसे राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। बेटा जिसमें संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली मांग को मान लेना आसान है, पर श्रीलंका में बेटे जैसा श्रीलंका केवल सहेलियों के लिए की मांग तमिलनाडु की पहचान और हितों के खिलाफ थी। जुगोस्लाविया में बेटा बहुत सारे समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूह इन्हों की तरफ बेटा बहुत सारिया मांगे रखी जिन्हें एक देश की सीमा के यानी के अंदर ही पूरा करना असंभव सी। तीसरी चीज़ है बेटा सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर भी उन्होंने की प्रक्रिया की भी करती हैगी। जैसे बेटा बेल्जियम श्रीलंका के हम उदाहरण देख सकते हैं। अगर बेटा शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो तो बेटा उन्होंने जानी कि मंगां पूरी तरह ईमानदारी नाल भी कराया जाता। पर अपने देश में बेटा अजकल की हैगा भी अजकल लोग जिमें मंगते हैं जिमें शासन को तो लोग शासन की है उन्होंने भी उन्होंने कोई ताकत है पावर है तो लोगों को दबाना शुरू कर देंगे ने। ये अपने जान के बहुत सारे जिन के कंट्रियां के कुछ कराया जाता वा। तो इस तरह बेटा कई देश में भी समाजिक विभिन्नतावां पाई ने सोशल डाइवर्सिटीज पाई जांदियां ने कंट्री दे विच। ते इन्हां नूं आपां एक खतरा नहीं मानना चाहिए सानूं। ते लोकतंत्र विच बेटा बहुत सारी समाजिक विभिन्नतावां की राजनीति एक अलग बात हैगी ते एक बेटा समस्या राजनीति एक लक्षण भी जान के आप लक्षण भी समझ सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक समूह इनकी परेशानियां अपनी जान की परेशानियां दसते हैं तो सरकार का ध्यान अपनी तरफ खिंचते हैं। तो इस तरह बेटा
ऐसे विभाग के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी यानी कि सामाजिक विवेचनों राजनीतिक विभिन्न तरह के सामाजिक विवेचनों के व्यक्ति ऐसे विवेचनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी यानी कि ये करती है। और बेटा ये चलते होंगे जिनमें एक कोई भी समाजिक विभाजन हद से ज़्यादा नहीं भी उभरता हैगा जे बेटा भिन्नता के प्रति जे ਆਪਾਂ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखांगे तो सभी चीज़ों को आसानी से भी यानी कि वो नहीं कर सकांगे ਆਪਾਂ ईजीली अकोमोडेट नहीं कर सकांगे तो आप जो लोग बेटा खुद को जानी कि भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्होंने अन्याय में से संघर्ष करना उन्हें भी कई बार अन्याय भी सहना पैंदा गा ते ऐसी लड़ाई अक्सर बेटा लोकतंत्र का रास्ता ही भी अपना लेंदी है। लोग शांतिपूर्वक सिद्धांत तरीके से अपनी मांगों सामने रखने के चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने का यानी कि प्रयास करते हैं। तो कई बार बेटा समाजिक समतावां इन्नी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वालियां होंदियां ने कि उनके स्वीकार करना संभव हो जाता वा। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ बेटा होने वाला संघर्ष कई बार भी हिंसा का काम रास्ता भी अपना लेंदा है। शासन के खिलाफ उठ भी जाने के खड़ा हो जाता वा ते इस इतिहास अपन दसदा कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की जड़ी पहचान करने और इनकी डाइवर्सिटी की पहचान है बेटा उनको समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। इनको वैसे जैसे कि बेटा आजकल देखो किसानों का आंदोलन चल रहा है ना दिल्ली में, तो बेटा हमारी भी कंट्री में तो बहुत सारे जैसे ऐसे होते हैं आंदोलन होते हैं, सरकार इनको दबाने का काम करती है। सो बेटा लोकतंत्र यही एक जेड़ा सबसे अच्छा तरीका इस दे लिए। सो बेटा अपना ये चैप्टर हो गया हम। बेटा आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? यस मैम। मैम सुनाई तो दे रही है मैम, पीछे शोर बहुत आ रहा है जी। बेटा आप अटेंडेंस लगवा दो। ओके मैम। जसप्रीत कौर प्रेजेंट मैम। कोमल सिद्धू कोमल सिद्धू कोमल बादाम के पैकेट दे विच जशन बेटा अनम्यूट करो। जशन जेडे अपने पास है ज्यादा साल से ना जशन बेटा अनम्यूट करो। प्रेजेंट आई। कि जसप्रीत ये तो हो गया। पलक प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। पलक जसप्रीत आईडी 1511 जशन सभी की अटेंडेंस होगी बेटा? बेटा सभी की अटेंडेंस हो गई? चलो बेटा बाय बाय मैम। बाय।